ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आविश्यतां नो मतिरप्यहेत्की। आप सभी का स्वागत है आज के इस We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं We are studying 14वां श्लोक। 5th chapter, verse number 15. इस श्लोक में भगवान ने कहा था In the previous verse, Bhagavan had said that किसी का न करता है he does not create the karma. फल का संयोग देता है। तो फिर He is not the doer of anybody's karma. मिलते रहते हैं। तो उसने कहा कि So when we get the karma, that is swabhavastu pravartate. Jiva has its own swabhava. के अनुसार According to that, everything is functioning. तो उसी को और बताने के लिए कि किस प्रकार से स्वभाव कार्य करता है, क्यों जीव So, in order to explain how the Swabhava works and how the bondage happens, he tells the 15th verse. न चैव सुकृतं विभुः
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन वह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी ईश्वर को Translation: पाप या पुण्य The omnipresent God does not become implicated in the sin or piety of anyone. ज्ञान The living beings, however, are deluded due to the fact that their self knowledge is covered by ignorance. भगवान तो So, कर्तृत्व में Bhagavan नहीं होते हैं। does not become implicated in anyone's doership, यहाँ कहा कि and here it is said he does not भी नहीं लेते। take anyone's तो पाप piety or का sin मतलब है कि also. ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी साधु के पास जाओ, Does not mean like you might have heard that you go to a sadhu, touch his feet, ले लिया, and then ऐसे बोलते हैं। he says that he has taken my papa, या गुरु को शिष्य बनाया तो शिष्य का or गुरु पर guru takes accepts disciple, so he accepts the karma of disciple. Bhagavan here says that he does not take anybody's papa or punya. अद्यत्ते कस्यचित् पापम नहीं चाहे सुकृतम विभु। यानी कि वो इसमें लिप्त नहीं Meaning होते। he does not become implicated in this. तो जीव बंधन में क्यों रहता है फिर? So why does the jeev तो ये पाप पुण्य का fall क्या into होता है? bondage? तो वो कहते हैं कि What happens to this papa and करता है, punya? क्योंकि जो करता है वो ही भोगता होता है, ये नियम है। So here he is saying one who is the doer is also the enjoyer. One who does not have doership also does not have enjoyership. In the previous verse, he said that he does not generate anybody's doership, meaning he is not the prayojak karta or the prayojya karta. ना वो इनके कर्मों के स्वतंत्र करता है। He is not the independent doer of the karmas of the jiva also. सृष्टि प्रभु किसी का कर्तृत्व पैदा नहीं करते हैं। He does not generate anyone's doership. इन कर्मों का कोई कर्तृत्व नहीं है प्रयोजक होने के नाते, तो इसलिए उसका कोई फल उनको नहीं मिलता है। That's why he does not get anybody's karma or result. वो सृष्टा होते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। Although he is the creator, still he remains free from everything. किसी के कर्म में He creates the world, but he does not become implicated in anybody's karma. तो फिर ये जीव जो है Then इसमें फंसता है। why is the jeev caught up in this? जीवात्मा जो है वो अपने मोह के कारण So he says that the jiva is caught up due to its moha or delusion. उसको अपना कर्ता मानते हैं, और जो कर्ता मानेगा उसके ऊपर उसका फल आएगा। One who considers himself the doer will also have to enjoy or suffer the results. होता है इसके लिए So why this delusion happens? आवृतम ज्ञानम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। So he is telling Ajnanena Avritam Jnanam, which is very important to understand, because that is the main reason. Whatever philosophical texts we have, whether it is Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Mimamsa, Vedanta, इनकी सबकी एक ही मान्यता है। they all accept one thing. Others also, whether Jain or Buddha, in India, whichever philosophical systems have existed, सामान्य सिद्धांत यही है कि they all have a common philosophy बंधन का that the original cause of our bondage and happiness suffering is ajnana, ignorance. What Bhagavan is telling here, ajnanena avritam jnanam. ईसाई धर्म का Like if you study Christianity जुडाइज्म का अध्ययन or Judaism, तो वहाँ वो कहते हैं कि एक so there they say that there is an original sin, आदम और ईव स्वर्ग में that Adam and Eve were in the heaven and they ate an apple which they should not have eaten. Due to that, they fell down from heaven due to that sin. क्योंकि मनुष्य उन्हीं के And because human being is their child only, so they are born with this original sin. और उस पाप को दूर करने के लिए And in order to remove that sin, Christ appeared. जो उनको शरण लेता है वो उस पाप से So whoever takes his shelter, he becomes free and goes to heaven. And who doesn't take his shelter goes to hell. सिद्धांत है। So this is their theory.
लेकिन हमारा सिद्धांत उनसे But भिन्न है। our philosophy is कि Siddhanta is different from ऐसा theirs. Our philosophy is that नहीं है Jiva does not have any such original sin, because how can we incur the sin of someone else's sin? If Adam committed some sin, we have nothing to do with that. ज्ञान के कारण But here every Jiva is under ignorance, deluded, फल मिलता है। and out of delusion he works and ज्ञान क्या है gets और the भगवान क्या है? result accordingly. और So, माया what is ignorance? What is knowledge? What is Maya? तो आत्मा का जो स्वरूप है So, the Swarup of the Atma, ही it अपना ज्ञान है कि मैं हूँ। naturally has this knowledge that I am. It has the knowledge of its existence, because any conscious substance भाव होगा will have its own ego, its own identification. This is the difference between conscious and inert substance. कि अपनी कोई Inert substance does not have any I identification, और जो चेतन होता है but the conscious substance has its own I-ness, the sense of identification. That is its Swarup, कोई and हटा नहीं सकता है। nobody can remove that. लेकिन माया But के प्रभाव से due to the influence of Maya, को कि मैं ये हूँ ऐसा ना सोच के वो सोचता है कि instead of thinking that I am, it thinks that I am the body. कारण होता है। This happens due to ignorance. And from where does that ignorance appear? Because there is no ignorance in the Swarupa of the Atma. कहाँ से अज्ञान आता है? So, from where तो does this ignorance appear? माया से। This ignorance comes through स्थिति Maya. So, this is a very strange situation, and we fail to understand it properly, but we have to understand it properly. आत्मा के अंदर तो So, Maya is not inside Atma, Maya is outside the Atma. If it is outside, का ज्ञान कैसे हो जाता है? then how does the Atma remain in forgetfulness of its own Swarup? Like there is a bulb, it has हम बाहर से light inside. से काले कपड़े से ढक दें तो बाहर Even if we cover it with some cloth outside, light will not come outside, but the bulb itself will have its own light. That cannot be removed unless you break the bulb. तो आत्मा की हत्या तो की नहीं जा सकती। So Atma cannot be killed. We have studied this earlier itself in the second chapter. So the I-ness of the Atma, nobody can take it away from it. That is why we never have any experience that I am not or I don't exist. Nobody has ever experienced of his or her not being into existence. Even those who say that I will die, they also use the word I. So, there is never an experience of the absence of I-ness, because it is in our Swarupa. That is why I am, the ignorance of I am is not possible. But what is the ignorance? The ignorance is not what I am. Ignorance is I am Atma or I am body. What am I? I am considering myself as the body. That considering as body, that is the ignorance. So how does that ignorance happen? So regarding that, Bhagavan is telling here, Ajnanena Avritam Jnanam. So Maya has two divisions. One is the Upadan and other is Nimitta. So the Upadan division is known as Prakriti or Pradhan, from which this world is created. The world is also true, it is not false, because it is made of Bhagavan's energy. So it is made of Prakriti. And from that Prakriti we have Ahankara, Mahatattva, etc.
तो वो तो है उपादान through which the body is created. So that is the upadana part of Maya. चलता, मानो आप But शरीर that है, itself शरीर is में not आपकी आत्मा sufficient. को रख दिया, Suppose you are in the तो आत्मा body, सोचती रहेगी कि ये शरीर है, ये मैं हूँ, दोनों में भेद रहेगा ना। so Atma will think, this is I am Atma, this is the body. पता है कि ये कार Like you are sitting in the car, you understand that you are different from the car. शरीर में रहे, So if Atma is just there in the body and body is made of Prakriti, मनोबुद्धि रहे बचे अहंकार इंद्रिय में भिन्न प्रकृति, राष्ट्रधाई उनकी भिन्न प्रकृति है, this is his different Prakriti, वो दोनों प्रकार का शरीर बना हुआ है। 8 types. Both types of bodies are there, the gross and the subtle. ज्ञान डालना पड़ता है, तो जिससे But you have to put some ignorance into that, due to which the Atma will think that I am the body. Otherwise, Atma will have the knowledge of the difference of itself and the body. ज्ञान है और मैं आत्मा So I am Atma, this is correct knowledge, and I am not Atma, this is the absence of that knowledge, and I am body, this is ignorance. प्रभाव से वो So then, due to the influence of Maya, it thinks that I am the body. जो निमित्त है, So then, the instrumental cause or nimitta in that, माया के दो विभाग हैं, it has again 2 divisions. One is Vidya and the other is Avidya. क्योंकि Because उपादान के तीन वास्तव में भाग हैं, सत्व रजस even the Upadan, the material cause, has 3 divisions, Sattva, Rajas and Tamas. So Vidya is the Sattva part and Rajas, Tamas are the Avidya part. दोनों ही अनादि हैं, And both are Anadi. अनादि अज्ञान आप सुनते हो, अनादि अविद्या, We hear of Anadi Agyan or Anadi Avidya. So it is beginningless. विद्या भाग है, So what is the Anadi Avidya? It is the Avidya part of the Maya, but like that there is Vidya also with the Jiva. But that is covered as of now. तो वो हैवी है, वो हावी है उस पर, वो उसको प्रभाव, So the Avidya has overpowered. फिर जीव में जो है वो अज्ञान हो जाता है, So then Jiva remains in ignorance शरीर हो, that I am the body. ज्ञानम, यहाँ ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान का अभाव नहीं है, Here Agyana is not the absence of Jnana. करके जब कोई Generally, ज्ञान और उसके पूर्व में अगर हम आ उपसर्ग लगाएं, if we use the word Jnana and attach A before that, then it indicates the absence of that object. Here Agyana does not mean the absence of Jnana, because you cannot cover any object with Abhav. जैसे प्रकाश है, ज्ञान जो है वो प्रकाश के समान है, अज्ञान Like light, knowledge is like light and ignorance is like darkness. नहीं सकते हैं, So you cannot cover light with ignorance, with darkness, because darkness is absence of light. So light cannot be covered with darkness. That is why this Agyana, which is covering the Jnana, this Agyana is actually wrong knowledge. प्रमा ज्ञान और एक भ्रम ज्ञान, Jnana is of 2 types, Pramagyan and Brahmagyan. If you have a rope in front of you and you understand rope as rope, it is correct knowledge or Pramagyan. And if you consider the rope as snake, then it is Brahma, it is also a knowledge, but it is wrong knowledge. भ्रम ज्ञान है, So here the word Agyana refers to Brahmagyan, wrong knowledge. So wrong knowledge has covered the बड़ी है, right knowledge. तो Like suppose there is a rope, if you understand rope as rope, it is right knowledge, but when you see rope in the snake, then the illusion of snake has covered the right knowledge of the rope being rope. That is why there you have 2 divisions of ये रस्सी नहीं है, Agyana. One is that it is not rope, and the second is it is snake. दोनों मिलके ही भ्रम होता है, Brahma is the combination of both. Similarly, currently we have this Brahma, or what Bhagavan is using the word moha, आत्मा नहीं हो, illusion. First is that first ignorance is that I am not the Atma, and second is that I am this body. तो काम नहीं चल, Because if I am not Atma, that is not sufficient for me to be in ignorance. कार में बैठे हैं तो आपको You are sitting in the car, कार भी नहीं, you say that
लेकिन मोह तो तब पैदा होता है ना कि मैं आत्मा नहीं I हूँ, am not Atma, I am not car. But ignorance happens when you say that I am the car. सोचने लगे If somebody starts thinking himself or herself as the car, then you will say that he is deluded. अपने को कोई कुछ मान Sometimes it happens, a person starts assuming himself to be somebody else. Like some say that I am Jesus, or somebody says I am an avatar. भारत में In India, especially, कोई अवतार पुरुष मैं कल की हूँ, some people say I am Kalki. तो अपने को ऐसा मान के So they have this illusion and they behave accordingly with this illusion. है भ्रम ज्ञान, So this jnana, the Brahma jnana, wrong knowledge, it deludes the person, होता है and out of that moha, कि what happens आत्मा का अपना अहम is that और वो केवल इतना ही है कि Atma has its own I-ness, and that is just I-ness. वो तो हटाया नहीं I am. That cannot be removed. But along with that, ढक दिया है, what we say has covered, आवरण आ गया है। वो आवरण क्या है कि मैं what is that covering? क्या हूँ, मैं शरीर, That what am I? I am the body. तो यही उसका आवरण है। So this considering oneself as the body, that is the covering. पता ना कि मैं आत्मा हूँ, When he says I am the body, then he does not know ज्ञान तो ये he is the Atma. The correct knowledge is that I am not the body, but that is covered. So then he thinks that I am the body. So that I-ness now, अहंकार है, that ahankara of एक हो जाता है। Sharira and ahankara of the Atma both become one, fused. अंश है, Because body also has its I-ness, प्रकृति या प्रधान which is the तत्व से अहंकार, अहंकार से ahankara being part of Prakriti. इत्यादि आती हैं। तो वो जो अहंकार है वो तो भौतिक पदार्थ So that ahankara which is part of Prakriti, it is material ahankara, it is not conscious, it is inert matter. लेकिन वो जो जड़ But अहंकार है, that inert ahankara जो आत्मा का अहम and this aham bhav, the I-ness of the Atma, both become one. This is called covering. देता है, The ahankara of Prakriti covers the ahankara of the Atma and both become one. And then the I is of the Atma, सारा शरीर वाला ये and शरीर हूँ, I'm considering the body, that part is of the material ahankara, and both combine together to form I am the body. So when you say I am the body, ज्ञान है। जैसे भगवान नृसिंहदेव में आधा मनुष्य है और आधा सिंह, it is somewhat like Bhagavan Nrsingadev, who appeared in the form of half lion, half man. So here, the previous part, I am, that is of the Atma, but the body, that is of the material ahankara. So it is now one statement, I am the body. मैं कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता, और You can't, if you just say the body, it is meaningless. If you just say I am, that is also meaningless. So both combine together, and that is beginningless ignorance, anadi avidya. ज्ञान है So our identification, identity और becomes this body, भगवान ने कहा है। and this is what Bhagavan refers to as moha. मोह में पड़ करके So when the jiva falls into this moha, he acts accordingly, वो जो है and अनित्य को नित्य मानता है, शरीर अनित्य he considers the temporary to be eternal लगता है, and the temporary body to be eternal, कहती है कि मेरा कभी मृत्यु ना हो, and the eternal to be temporary. तो मृत्यु होती नहीं है, The Atma never dies, and because it considers itself the body, it never wants the body to die. But body is ever changing. को अपना जब मानता है तो उसको So when it considers itself as the body, it wants to protect the body as it is eternal. That is why everyone has this desire not to die. And it considers the unclean to be clean, impure to be pure. Atma is pure शुद्ध है, and body is completely impure. तो उसको वो So शुद्ध मानता है। it considers the body to be pure. इसलिए कोई Body is completely impure. That is why whenever anyone dies, nobody wants to touch लगाओ तो स्नान करो, the body. It's because then if you touch, then you have to take bath. And if you try to preserve the body for few days, then मसाला अंदर से निकलेगा, whatever is inside the body starts coming out, बदबू उसमें आएगी, and it starts rotting and smells very foul. का ही है।
So this is all in the body. हम इसको शुद्ध It मानते is हैं impure, but we और consider it दुखपूर्ण है, to be pure. And it is an abode of suffering. लेकिन इसको There हम is no शुद्ध happiness in the मानते हैं। body, but we consider तो it to इसी be an को abode अविद्या of बोलते हैं। happiness. So this is avidya or ignorance. शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख और आत्म ख्याति अविद्या। और ये मेरा अपना आपा नहीं है शरीर, लेकिन इसको अपना आपा मान लेना कि ये मैं हूँ। So the body is not mine, and then but we consider it to be mine. So this is how avidya functions, and this world continues. तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ है। So this is a very important verse that Bhagavan is trying to explain to us. आधे श्लोक में अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, Just in half verse, लेकिन इसको समझना गहराई से कि कैसे ये होता है, कैसे आवरण he has explained, but we have to understand it in depth, how the jiva remains covered and how it remains in delusion. मोहन होता है ना, So this moha is like hypnotism. जैसे आप किसी को सम्मोहित कर दीजिए Like if you hypnotize somebody, तो अपने को कुछ का कुछ then that person considers himself or herself to be something or someone else. और जो हम हैं नहीं, So we also start considering ourselves to be something else, which we are not, and but we work with that other wrong identification. So we have just these ideas that we are this or that. हमारे अपने जो माना हुआ जो हमारा अहंकार है, So all these wrong identifications, which is due to the material ahankara, चालू होती है। everything works according to that. मेरे को दूसरा मेरे को क्या सोचते हैं, Then we start thinking what others think of me. पहनते हैं, जो हम संसार में अपने आप को दिखाते हैं कि लोग मेरे को ऐसा माने, मैं ऐसा हूँ नहीं, We try to wear the mask. तो ऐसा माने। We try to pretend ourselves to be what we are not. केस वगैरह We want that people should consider ourselves to be us to be very nice. Like when we go out of home, we comb our hair properly. We want to look nice. But when we are in home, we are not worried. But when we go out, then we look ourselves in the mirror and then make sure that we appear smart or beautiful. So point is that we want to present a different picture of ourselves in the outside world. उदाहरण है जो So this is a very ordinary, crude example दूसरों को दिखा of how we decorate ourselves. अपना जो व्यक्तित्व But actually, even our personality, कहते हैं, we want to present it कि हमको in a different way to others. And we are always worried about what others think of us. कहते हैं। So we are always very much dependent on others. And our life continues under this hypnotism. Think always remaining afraid that somebody should not criticize us, or if somebody has criticized us, then we start reacting, or we start defending ourselves. Even if you know that you have some problem, like somebody is very has angry nature, and somebody else accuses him that you are such an angry person, then he starts reacting. He doesn't want to listen to that. He wants to present a very peaceful image of his own. Or you say, or somebody says to us that you are very greedy or lusty. Nobody wants to listen to all this. So in order to कोई हमें एक छोटा सा protect ourselves from these criticisms, then we start reacting. If somebody writes a critical comment or message, then we start reacting or defending ourselves. So this is all the game of ahankara. करते हैं, We compete with others, we compare ourselves with others, and we want to prove that we are better than others. जीवन तुलना में ही निकल जाता है। So our whole life gets spent in comparison only. बहुत लोगों का जीवन तो इसी में चला जाता है। I have to prove to somebody that I am better than him. करते हैं ना ऐसे कि मैं तुमसे कितना महान हूँ।
we want to prove ourselves, how we are so great. So what is trying to prove? It is the material ahankara that is trying to prove. ऐसी दूसरे की है, Because at the level of Atma, there is no difference between two human beings. Like we are Atma, others are also the Atma. नहीं है, सब एक Whether it is man, woman, शरीर को लेके animal, bird. तेरे को दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा तेरे So, but we have the ahankara related to the body, and we want to prove to others को क्या दिखाऊंगा, that I will show what I am. वो तो है, But what will you show? You will show the body, things related to body. But you are not, you are none of that, what you are trying to show. मैं है, Whatever is changing, you are none of that. मैं नहीं रहता, Oh, the only unchanging element is that I. जितना भी आपने आवरण लगाया हुआ, Whatever covering we have made around the I, we are none of that, and that is always changing. And our whole life, we spend our whole life किसी ने आपको एक glorifying that covering. जो आपको अच्छा नहीं लगा, Somebody tells you a word which you do not like, then how much time you waste thinking about that. भगवान कहते हैं ना, So this is illusion. ज्ञान है, This is the moha, because that is ignorance. तो फिर वो अहंकार के कारण सहनशीलता नहीं रहती है, So then due to this ahankara, we do not have tolerance. We compete with others. We want to defeat others. दूसरों से भय लगता है, We remain afraid of others. छवि बनी हुई है, That I have established an image of myself in the society. एक तो शरीर संबंधी There should be no damage to that image. One fear is of the body, और फिर अगर आप leave it. मार्ग में आ जाते हैं, But then you have other fears also. And then when you come to the spiritual path, you have a new ahankara that I am a great devotee, I am a senior devotee. बड़ा रोग रहे ना, मैं सीनियर डिवोटी, This is a big disease of being a senior devotee. So what if you are a senior devotee? How does that make any difference? You joined little earlier, का नहीं है कि वो आप but that does not mean that there is no guarantee that you will, भी जा सकते हैं, that the one who came later than you will not go ahead of you. लेकिन वो रहता है ऐसे, तो वो सब Even a newcomer can become more advanced than you. जो बृहद भागवतामृत So this is all external ahankara. In Brihad Bhagavatamrita, Sri Sanatana Goswami is trying to explain this only, that all this wealth, को भक्ति का influence, etc., all this is external. It has nothing to do with bhakti. कार रहता है कि But we have this ahankara, that I am also something great. फिर हम जो है And then दूसरों से बदला लेते हैं, we try to take revenge from others, को ऐसा कहा, that he told like this or he told like that. This is all due to ahankara. This is illusion. मतलब एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता Moha means a type of है, हम में ही कार्य bewilderment, and then working in that bewildered state of mind. अहंकार है, ये बाहर से हमारे ऊपर लादा हुआ है, And this ahankara has been imposed externally on us. हम देखा है बच्चे का If you have seen life of a child, how it begins, we may not remember our own childhood. But if you see the other children, child does not have any ahankara. He is lying naked on the bed. He doesn't have any shame that if others will see, what will they think of me? But if you are an adult, then you have the ahankara and you feel ashamed. नंगे होके, तो उनको तो When Shukdev Goswami was walking naked, he was not feeling ashamed because he was totally above the bodily conception. इसलिए उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, The child is also not identifying with the body, so the child doesn't care. But as he starts growing up, then the ahankara starts getting imposed. You are beautiful or you are naughty. जो भी माँ बाप बोलते हैं Whatever parents keeps telling the child that you are a fool, कि मैं मूर्ख then he starts thinking that I am a fool, and he will keep fighting with this wrong conception that I am a fool, because you have put inside his head that you are a fool. है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अब उसको अंदर He's a fool or no, that is a different thing. But whatever parents say, it just remains inside that I am a fool. Then whole life he keeps trying to prove that I am not a fool. यही सम्मोहन है, This is bewilderment. This is hypnotism. तो कुछ बोल देते हैं उसको, किसी को So you tell something, you tell somebody that you are beautiful, then he gets this ahankara that I am beautiful.
माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम बहुत सुंदर हो, राजा बेटा, Now parents say that you are very beautiful, के समाज में you जाते are हैं my तो वहाँ darling राजा वाजा है, son or daughter, but स्कूल में in जाते हैं the बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो उसके society अहंकार he को is not some great king. When he goes to school, दिमाग में his चला जाता है, friends make fun of him, क्रोध आ and then जाता he है, becomes जो कुछ dejected or he becomes क्रिया करता है, angry and tries to ये react. ही मोह है, So this is illusion, this is इसी से bewilderment, संसार चलता रहता है। and this is how the world continues to function. तो ये अहंकार का एक खेल है, So this is all a game of ahankar, मोह है, ये अहंकार because के this स्तर पर है, moha फिर ये is मन at the level of ahankara, then it appears at the इच्छा level of mind, like at the mental level we have our thoughts and we hold on to some thought or conceptions, कुछ व्यक्तित्व बनाते हैं, उसको पकड़ते like हैं, we how we hold on to a particular personality of ourselves. We are also attached to some concepts or ideas प्रकार की जो that no, this is like this only or this is like that only, like different vadas are there, so you just hold on to one vada and then you say that only this vada is correct, all others are wrong, so then you are not ready to listen to others. So this is how things function. समझना So it is very essential to understand this. And यहाँ पर दूसरी बात यह है कि भगवान ने जो कहा कि ना another point is that Bhagavan says, तो ये जो कस्यचित शब्द का प्रयोग किया है, he used the word kasyachit. He is using it in an ordinary way. के शरणागत हो Otherwise, if somebody takes shelter of Bhagavan, and then Bhagavan himself says in the 18th chapter to Arjuna that शरणम गजा हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कहते हैं ना वहाँ पे, Bhagavan says there तो सब पापों से मुक्त कर that I will free you from all the sins. वो ले रहे हैं, That means उनको तो लगता नहीं है, he is taking away the sins. He is taking the sins means he is not implicated in that, meaning he is just destroying the sins. पाप नहीं लेते हैं वो, Because he told here that he doesn't take anybody's sins, ऐसा जिसका कर्म है वैसा वो चलता रहता है। meaning he does not destroy anybody's sin. A person, everyone's life continues according to the karma, but that is in an ordinary way. But when it comes to bhakti, then this rule is not applicable there, because he himself says, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम अस्नामि अस्नामि प्रयतात्मन, वो कहते हैं ना मैं तो उसको लेता हूँ, he says that I take that भक्ति से मेरे को देता है, मैं उसको ग्रहण करता whoever offers to me anything in bhakti, हूँ, इसको भी हमको समझ flower, leaf, etc., I accept it. So we have to understand this, because in Gita, Bhagavan himself says में द्वेष अस्ति ना प्रिय, कि मैं संभूतों में समदृष्टि रखता हूँ, ना मेरा that I have equal vision towards everyone. I don't envy anybody and I'm not partial to anybody. But तो भक्त के ऊपर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्रकरण भक्ति का है भी नहीं। whoever is bhakta is dear to me. So this rule, what he is telling here, does not apply to bhakta. Here he is explaining in general. फिर ये जो अज्ञान है, Then this ignorance, हम समझ सकते हैं, we can understand this ignorance in two ways. असत्वात्मक और एक अभानात्मक। एक तो अपनी सत्ता को ना जानना, One is not understanding our own existence, our satta, उसका ज्ञान ना, and the other, what we are, not having that knowledge. Like, for example, वहाँ देखते हैं पर्वत के ऊपर, if you see smoke on the mountain, आप में संशय होता है कि यहाँ पर then you start doubting whether there is fire there or no. आग ना होना ये उसकी So, सत्तात्मक है, क्योंकि not उसको देख नहीं रहे, not seeing fire is asattatmak, meaning you are not seeing the fire, so it is the absence of its existence. And not having the knowledge of the fire, तो कैसी है, कितनी बड़ी है, even if fire is there, whether it is huge आप or less, you don't have that knowledge. So then you start making inference that because there is smoke and wherever there is smoke there is fire, so then you start making inference, okay, there is fire on the mountain. So you are not seeing the fire, but you have the knowledge that there is fire, but you have not seen it directly, how big it is, where it is. भान नहीं है। So you are not हैं, एक
तो are सत्तात्मक ज्ञान है, cognizant of it. तो आपको सत्ता का ज्ञान तो हो गया, जो So अलग है, you now you have knowledge that उसका there अभी is आप fire, अपरोक्ष but you रूप से have नहीं indirect. तो अभी हम इतना तो हम जान सकते हैं शास्त्र के माध्यम से कि From Shastra, we can know this शरीर much नहीं है, लेकिन that इसका फिर I मैं अनुभव am. करूं, जिसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, तो वो But साधना से ही but we होता have to experience, realize that I am not this सब में से body. इनको That शास्त्रों happens से only अध्ययन through करके sadhana. इतना ज्ञान तो From हर एक व्यक्ति Shabda, प्राप्त from कर learning सकता through है Shastra, this कि much मैं शरीर से can be भिन्न understood आत्मा by हूँ, everyone. We can मेरी understand सत्ता that अलग है। I am ये different सत्तात्मक from ज्ञान body, I am बिल्कुल अलग Atma, है, my लेकिन Satta उसका is different. अनुभवात्मक ज्ञान, उसका But अपरोक्ष ज्ञान to get realization, experience of that, for that, साधना करनी पड़ेगी, I have to do sadhana. क्योंकि जो Because अज्ञान है this उसके भी दो हिस्से agyan or हैं, मैंने ignorance, पहले बताया it कहा has ना कि two एक तो parts. हिस्सा उसका ये है कि मैं हूँ, One is I am, मैं आत्मा हूँ, इसका ये ज्ञान ना होना, not knowing that I am दूसरा Atma, and the other, मैं शरीर हूँ, I ये समझना। am body, understanding this, पहला वाला thinking तो like this. हो जाता है आराम से कि So ठीक है, मैं first शरीर से part भिन्न आत्मा हूँ, लेकिन is easy, मैं that I कैसे am शरीर नहीं हूँ इसका अनुभव होना, इसके लिए that अनुभव I करना am पड़ता है। तो not the उसके लिए body. भगवान जो है दूसरा श्लोक So बोलते हैं, Bhagavan is 16वां telling श्लोक, for the second part, the 16th verse, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् but those येषां for नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनकी translation, अविद्या but अविद्या के those for कारण whom such ignorance नष्ट has हो been गई है, dispelled by उनकी विद्या discrimination of the अप्राकृत self, आत्मज्ञान को their discrimination उसी reveals the प्रकार transcendent प्रकाशित self, करती है जैसे just सूर्य as संसार the को sun प्रकाशित illuminates करता है। the world. तो ये अज्ञान का नाश करना So this destruction of और ignorance अज्ञान का नाश होके फिर उसका प्रकाश होना, and then दो चीजें यहाँ पर illumination of the truth, श्लोक में, एक तो two बताया things are कि mentioned. ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश, One is और अज्ञान का नाश होने dispelling के of बाद में फिर ignorance by उसका discrimination प्रकाश of the होना। self, and then revelation of the पहले तो transcendent इस बात self. का नाश So होना first of all, कि this मैं शरीर, dispelling of ये ignorance, जो अज्ञान है the ignorance इसका that I नाश am होना this कि मैं body, शरीर नहीं हूँ, destroying that और फिर ignorance, मैं आत्मा हूँ, ये and then इसको प्रकाशित करना। revelation or तो understanding that दो I am the स्तर हैं यहाँ Atma. पर भी, So इसी प्रकार दो this, स्तर बताए this is, इस there are बार two इस श्लोक में भी, stages. दो स्तर से हम इसको देख सकते हैं। So we can understand this in two ज्ञान का stages, नाश, at two levels. और वो First अज्ञान क्या is है? destruction of अज्ञान ignorance. वही अविद्या है And what कि is मैं that शरीर हूँ, ignorance? That is the avidya, या मैं that I मन am के the body. विकार हूँ, मेरा ये अहंकार है, मैं वो हूँ, तो ये Or the नाश होता है ahankara, उससे I am कि this, ये मैं that, नहीं हूँ, और फिर dispelling ये of जो this हूँ ignorance. And then उसका प्रकाशित what होना। I am, revelation of that. तो एक आवरण है और एक विक्षेप है। इस One is अविद्या के भी avaran, दो the भाग covering, हैं, and other एक is आवरण भाग vikshep. है और एक विक्षेप भाग है। Avidya has two parts, तो avaran आवरण and भाग तो vikshep. हमारा जो Avaran स्वरूप part ज्ञान है उसको ढक is देता है, the covering of our और विक्षेप swarupa जो है वो gyan, हमको गलत ज्ञान देता है। and vikshep is that gives us wrong knowledge. मैं आत्मा नहीं हूँ, इतने से ही काम नहीं चलता है, लेकिन मैं So I शरीर am हूँ, not Atma, ये this much is not sufficient. विद्या का काम है। तो दोनों I का am not निराकरण यहाँ body, हो this जाता much है is ज्ञान not से। sufficient. So तो इसमें जो है दो बार ज्ञान शब्द का प्रयोग so हुआ। here in this verse, the word jnana पहला is ज्ञान used twice. ज्ञानी ने जो अज्ञान का विनाश करता है। First is jnanena, that destroys the ajnan. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी So की here पंक्ति का Shri बहुत Vishwanath महत्वपूर्ण है। Chakravarti Thakur, his commentary is very मैं उसकी दो important. पंक्ति पढ़ता हूँ So आपको। I will कहते हैं read two आदित्य lines प्रभा from there. यथा अंधकारम विनाश्य घटपटादिकं प्रकाशयति तथैव अविद्या अविद्याया एव अविद्याम
विद्या एव अविद्याम विनाश्य तस् जीवनिष्ठम ज्ञानम परम अप्राकृतम प्रकाशयति। तो कहते हैं कि So जो माया के दो भाग मैंने बताए थे, Vishwanath Chakravarti भाग और Thakur निमित्त says भाग, that I had explained two parts of Maya and then Vidya and Avidya also. हमारे अंदर अभी अविद्या So है, just जिसको like अनादि now we अविद्या have कहते हैं। Avidya, what we ऐसे call अनादि beginningless विद्या भी Avidya, हमारे like that we have beginningless Vidya also. जैसे मैं शरीर नहीं, मैं Like आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ, ये अविद्या this जो बैठी हुई है, Avidya that I am ऐसे ही not the मैं body, शरीर नहीं हूँ, Atma, the body. So ये similarly, विद्या the जो हमारे अंदर Vidya बैठी हुई है, that I am not the body, I ये am सत्वगुण की है, Atma, that जो is गीता also में there. भगवान That is कहते of हैं Sattva सत्वात् Gun. In संजायते Gita, ज्ञानम, Bhagavan says, कि सत्वगुण से Satvat ज्ञान होता Sanjayate है। Jnanam, that from तो वही Sattva ज्ञान, Guna comes पहला जो Jnana. ज्ञान शब्द है यहाँ, ये विद्या So के the लिए first प्रयोग किया है, Jnana word that is जैसे used कि for Vidya, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका से हमको like we can पता चलता है। understand तो from ज्ञान the शब्द का अर्थ commentary of विद्या Sri करते हैं, Vishwanath तो विद्या Chakravarti से Thakur. उस So ज्ञान he यानी जो translates Gyan as अविद्या है, Vidya. उसका विनाश होता है, So the Avidya, it और gets जब उसका destroyed. विनाश हो जाता है, And यानी when कि it is destroyed, अंधकार हट जाता है, तब meaning वो the प्रकाश होती है। darkness is removed, जैसे then सूर्य the का truth उदय is हुआ, revealed. जैसे अंधकार है इस कमरे में, Like अगर the हम example बिल्कुल of sun. अंधकार कर दें So तो if हमको कुछ we दिखाई नहीं देगा, have darkness in the entire और room, we जब हम cannot see प्रकाश anything. डालेंगे तो कमरे And में when जितनी there भी will be वस्तुएं light, रखी हुई हैं then वो whatever प्रकाशित is हो in the जाएंगी। room, it will be तो revealed. वस्तुएं कहीं से लाई नहीं गई हैं, तो पहले से ही So थी वहां those पर, objects have वो not been प्रकाशित brought हो from जाती हैं। anywhere. They were already तो there. They इसलिए just हमारा जो become आत्मज्ञान है illuminated वो now. प्रकाशित होता है So our Atma जब वो Gyan, it अविद्या becomes हट जाती है, illuminated when the Avidya क्योंकि is वो ज्ञान तो removed. है ही वहां पर, Because that knowledge is already केवल there. हमको उसकी एक प्रकार से विस्मृति है, But we are in जो हम forgetfulness उसके of बारे that में अभी knowledge. जागरूक नहीं है, Meaning अज्ञानी we are हैं। currently not in awareness of that. तो सुषुप्ति और समाधि में यही अंतर है। So this is the difference between जब आदमी Sushupti गहरी and नींद में Samadhi. सोता है, When a person जहाँ is स्वप्न in नहीं deep होता है, sleep, तो उस समय where आत्मा there is अपने no स्वरूप dream, में ही रहती है, that time the लेकिन उसका Atma भान is in नहीं the होता। Swarup of Atma only, but it is not aware of that. तो उसका जो दो भाग जो So हैं, the two एक आवरण parts और which एक are there, विक्षेप, one is तो Avaran and the विक्षेप other भाग तो Vikshep. हट गया। The जब आप Vikshep सुषुप्ति में part जाते got हैं तो removed. विक्षेप भाग When तो you चला go गया। into Sushupti, विक्षेप भाग क्या है कि मैं शरीर हूँ, the Vikshepa part is लेकिन gone. What मैं is Vikshep? That I am the आत्मा body, हूँ, but I ये am the भाग Atma. अभी This भी part, उसका आवृत रहता है। it is still covered. तो इसलिए उस सुषुप्ति में भी अविद्या रहती है। So in Sushupti also there is इतनी अविद्या avidya. रहती है, उसको अपना भान नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ। We do not मैं हूँ ये realize तो रहता है, लेकिन मैं that we are आत्मा the हूँ ये Atma. भान नहीं रहता। I am, that is there, but I am the Atma. That इसलिए awareness is व्यक्ति not जब there. सुषुप्ति से बाहर आता That's है why तो when कहता a है कि मुझे person कुछ comes पता नहीं out चला, of Sushupti, मैं he बहुत says पीछे that I था। did not understand anything. I slept लेकिन समाधि peacefully. में जब व्यक्ति अगर But समाधि में पहुंचता है तो समाधि when में a भी person goes बाहर into का उसका कोई Samadhi, भान नहीं रहता है, then शरीर also शरीर संबंधी कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन उसको अपना he is ज्ञान not रहता है। aware of external तो उस surrounding, समय but he has knowledge दोनों of से himself. बाहर निकलता है, So he उसको अपना भी comes भान out होता है of कि मैं both. हूँ, He also is aware that I am, और शरीर इत्यादि से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। and he has no relation तो with इससे body, हमको पता etc. चलता है So कि from हमारा this जो we understand स्वरूप ज्ञान है, that our यहाँ ज्ञान Swarupa का मतलब Gyan, स्वरूप ज्ञान है, here केवल इतना नहीं है Gyana कि means बहुत कुछ Swarup ज्ञान हमें Gyan, भरा not हुआ है। that too कई much एक knowledge लोगों is में there भ्रम in है, वो सोचते inside. हैं कि Many हमारे people ज्ञान में have हमारी this आत्मा के अंदर बहुत कुछ illusion भरा हुआ है, that there is a lot सारा ज्ञान inside the हमारे अंदर Atma, ही है। all the knowledge is in the Atma. ऐसा नहीं है, सारा ज्ञान It is अगर not अंदर like ही that. है तो फिर If हम all the बाहर से knowledge ज्ञान is की in क्या the क्या करते Atma, हैं। then why are we taking knowledge मैं from हूँ outside? इसका ज्ञान तो हमको कहीं I से लेना नहीं am. पड़ता ना, We do not have to take this knowledge from anywhere आपको else. कोई बताना नहीं पड़ता कि आप Nobody हैं, has to tell you that you exist केवल or एक you भ्रम are. पैदा किया हुआ है अविद्या के कारण कि मैं Only the शरीर हूँ, illusion due मैं to हूँ, avidya is इसको that I कहीं am the बाहर से नहीं body, लाना पड़ता, but I am. क्योंकि ये This ज्ञान knowledge मेरे does अंदर not have है to be ही, brought from outside अब because इतना I ही ज्ञान है, already इसके have अलावा this और कोई ज्ञान नहीं knowledge, है। and Atma has only this much gyan that I am.
nothing more than that. भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि मेरी So we आत्मा should के अंदर not ये create ज्ञान this भरा हुआ है, illusion that पूरा वेदों का Atma ज्ञान भरा हुआ has है, all the knowledge of Vedas within सब कुछ and अंदर है, ऐसा कुछ everything नहीं। is inherent. अगर मेरी आत्मा के No. अंदर पूरा वेदों का ज्ञान होता If all the knowledge of तो फिर Vedas मैं would have अविद्या में been in कैसे the पड़ Atma, जाता? then how would I have fallen into अविद्या में avidya or पढ़ने का तो सवाल ignorance? ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं There उठता। is no question of falling into पूरा avidya. वेदों का ज्ञान का मतलब वेद तो भगवान क्या कहते हैं, वेदस्य सर्वैरहमेव All वेद्यम्। the knowledge of Vedas वेद means का Bhagavan सार says that I ज्ञान जो am है वो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान I है। am the essence of तो the अगर मेरे Vedas. अंदर So the भगवान श्री essence of कृष्ण का Vedas is ज्ञान knowledge मेरी of Sri आत्मा में Krishna. है So if the तो मैं knowledge उसको of Sri कैसे भूल Krishna is जाऊंगा? in the Atma, तो then मेरे how can I स्वरूप में आ forget गया that because that is in तो my उसका तो कोई Swarupa? संभव नहीं है। माया उसके ऊपर प्रभाव, कहें कि नहीं माया से ढक जाता है, माया उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती, So क्योंकि Maya भगवान और cannot भगवत influence संबंधी that वस्तुओं का जो ज्ञान because है वो तो Bhagavan and objects अंतरंग related to शक्ति है, Bhagavan, that is उस पर माया का Antaranga. कोई प्रभाव So आ ही नहीं सकता है। Maya cannot influence that. तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। So this is लोगों a में जो सोचते great हैं कि illusion among आत्मा some के अंदर people सब ज्ञान who think बैठा that हुआ है, all the ये knowledge is केवल already उसका there in the आत्मा का Atma. स्वरूप ज्ञान है, जिसको यहाँ This is कहते हैं just कि the सत्यादित्य Swarup ज्ञान Gyan of the प्रकाशित Atma. तत्परम, कि वो उनका स्वरूप ज्ञान है जिसको प्रकाशित करता है। The Swarupa Gyan gets और illuminated. तत्परम के कुछ लोगों ने अर्थ किया है कि परम का मतलब परमात्मा, Some people have taken the meaning of परमात्मा Tatparam का ही here, ज्ञान होता है। Paramatma, तो अगर ऐसा that अर्थ the करना it है, is the knowledge श्री of विश्वनाथ Paramatma चक्रवर्ती that जी is ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। परम revealed. का मतलब Vishwanath Chakravarti Thakur does not take जीव that निष्ठ जो meaning. ज्ञान है He उसी को only बोलते हैं। takes this knowledge as जीव Jivanishta निष्ठम ज्ञानम Gyan. परम प्रकृतम, बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। He has told अगर that very आत्मा के अंदर clearly. सब वेद का ज्ञान होता If है all तो the तो knowledge लिखते of हैं यहाँ पर, Vedas is in the Atma, then he would have स्पष्ट written रूप here में कहते हैं कि जीव निष्ठम that is ज्ञानम eliminated. But he says परम clearly, अप्राकृतम। परम का मतलब अप्राकृत, क्योंकि जीव का जो ज्ञान है कि मैं हूँ या मैं आत्मा हूँ, because this ये knowledge तो of Jiva अप्राकृत that ज्ञान I है, am कोई भौतिक or I ज्ञान am तो नहीं Atma, है, this is also not क्योंकि material भौतिक संबंधी knowledge. नहीं है। आत्मा संबंधी तो आध्यात्मिक ज्ञान होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो इतना ही ज्ञान है बस। So we have this much knowledge only. लेकिन अगर परम का अर्थ परमात्मा करते हैं तो But फिर if ऐसा we take the सोचना meaning होगा कि of जब Param उसको as आत्मा Paramatma, का ज्ञान होता then we है have to सही रूप understand से आत्म that साक्षात्कार, और आत्मा भगवान का अंश है, तो उसको ये भी ज्ञान when one होता है has कि मैं Atma भगवान का अंश हूँ। Sakshatkar, then and Atma is लेकिन ये Angsha of तभी Bhagavan, then संभव he है also अगर knows कोई that he is Angsha of Bhagavan. But that is भक्ति only संबंधी possible when साधना करता है। somebody does sadhana जो केवल of शुद्ध bhakti. कर्म मार्ग से चलता है, Those who are just following the ज्ञान pure योग से karma चलता है, marg तो or उसको by तो ऐसा ज्ञान jnana नहीं marg, होगा। they will वो not तो have अपनी this आत्मा को knowledge. केवल आत्मा ही समझेगा। He will understand Atma as Atma only. अद्वैतवादी केवल Or अद्वैतवादी है तो ब्रह्म समझेगा। if it's Advaitvadi, he will understand it as Brahma only. Cannot have knowledge more than that. तो केवल जो भक्ति योगी होगा Only the Bhakti Yogi, he will have this मेरा knowledge संबंध भगवान से that है, my relation ये is उसका with स्वरूप Bhagavan. साक्षात्कार में उसको जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसका अनुभव होगा जी, दास भूतो हरे रहेगा। He will have the experience that he is Das इसका of ज्ञान होगा Bhagavan. तो उस अर्थ में परम का अर्थ So then the meaning of Param can be taken as Paramatma. श्री विश्वनाथ But our Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur is not दूसरे taking लोगों ने that ऐसा meaning. अर्थ किया है, Others have taken that meaning. तो अलग अलग दृष्टि से अर्थ किए जा सकते हैं। So the meaning can be derived from different angles. ज्ञान की So महिमा भगवान ने in this बताई है, verse, Bhagavan has explained the glory of ज्ञान Jnana, कितना महत्वपूर्ण है, that how और ये important हमारी is भारतीय Jnana. संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है। And this is a speciality of our Indian culture, that here इसलिए इतने Jnana शास्त्र यहाँ has been given a lot of importance. और इस ज्ञान की महिमा भगवान ने चौथे अध्याय में भी बताई थी, सर्वम ज्ञानम प्लवेन In the 4th chapter also Bhagavan had told कि इस अज्ञान रूपी पाप से आप uh, ज्ञान रूपी नौका से तर जाएंगे। with the on the boat of knowledge you can cross over this ajnana, पाप का the और sin कोई of कारण ajnana, नहीं है, because पाप this क्यों ignorance करता है itself is व्यक्ति? sin. Why अज्ञान के कारण। there is no other reason for sin? Why जब does a उसको ज्ञान हो person जाए perform कि मैं sinful आत्मस्वरूप activity? हूँ, Due तो to शरीर को ajnana, लेके पाप क्यों करेगा? ignorance. क्योंकि जितने भी पाप If he व्यक्ति has करता है, knowledge वो of the शरीर Atma, के why लिए will करता है। he do this sin? उससे Whatever आत्मा को sin तो a कोई लाभ person होता नहीं। performs, he does it for the body. तो It जब does उसको ये not ज्ञान हो benefit the जाएगा कि Atma. मैं शरीर नहीं So when हूँ, he मैं will आत्मा have हूँ, this तो पाप knowledge that क्यों I am करेगा? not the body, I am Atma, why will he तो do पाप करने sinful की जो activity? मूल
So प्रवृत्ति the है उसका जो main कारण है inclination of वो doing हट जाएगा papa, तो फिर वो कहाँ the जाएगा? reason when that is हमारी removed, प्रवृत्ति जो है वो ज्ञान then से why होती will है। one do sin? जाना तो इच्छा We से are करो, impelled by our knowledge. हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो अपने Whatever ज्ञान के actions आधार we पर do, करते हैं। we do it on the basis of ये our ज्ञान जो है knowledge. वो That knowledge, प्रमा भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है। that can be सही correct ज्ञान or हो that सकता can है, be चाहे wrong वो सही also. ज्ञान होगा जिसको ज्ञान So से when one will have the जो correct पुण्य तो knowledge, वो पाप क्यों करेगा? why कभी will वो he उसको do भ्रम sin? ज्ञान होगा जब वो मोहित होगा, But जैसे if he पिछले will श्लोक में have कहा तेन मोहियां wrong नित्य knowledge, तो फिर तो वो then there जंतु is ही है। problem. So then he is Jantu जंतु शब्द only. का भी प्रयोग भगवान ने किया है पिछले श्लोक में। जंतु का मतलब क्या होता Bhagavan है? has पशु। used the word Jantu also in the previous verse. तो पशु और Jantu मनुष्य means में what? क्या It means अंतर है? Pashu. So ज्ञान what का is the मतलब difference between human आहार and निद्रा animal? अन्नमथमञ्च It is that of समानमेति knowledge only. ज्ञानम तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। मनुष्य में और पशुओं में जो मूल भेद है वो वास्तव The में main difference between human ज्ञान का beings ही and animals is of ज्ञान this विहीन knowledge वो only. पशु ही है, द्विपद पशु है। So without that इसलिए knowledge, he ये is like a ज्ञान का two-legged बहुत महत्व animal है only. और That's गीता में भी why भगवान there बार is a बार lot of ज्ञान की बात importance of करते this हैं। knowledge. And in Gita पहले भी also जब Bhagavan तीसरे speaks अध्याय again में and कहा again था about अमृतम this ज्ञानम knowledge. नित्यम ज्ञानिनो नित्य वैरिणो, Earlier also he had told, कि इसने हमारा ज्ञान जो है वो ढका हुआ है और ये हमारा नित्य वैरी है। so he told that तीसरे our अध्याय में knowledge is तीसरे अध्याय में covered ज्ञान की उन्होंने प्रशंसा की, ज्ञानाग्नि सर्व and कर्माणि that नश्यति is the Nitya Vairi. नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। तो उसी ज्ञान की बात फिर यहाँ करते हैं। So here he is talking about that knowledge only. और इसमें ये भी समझना है कि And in this we जिस have to विषय also का understand अज्ञान that होता है, whatever जिसको आश्रय ignorance लेकर we ज्ञान have, होता है, हमको ज्ञान उसी विषय का और उसी को आश्रय लेके करना पड़ेगा, तभी उस we have to take knowledge of that only. ऐसा नहीं है कि हमको अज्ञान एक वस्तु का है और हम It is ज्ञान not दूसरे that we विषय का have लेंगे, ignorance of तो one उससे and we take knowledge of the वो other. ज्ञान हटेगा नहीं। With that, the तो ignorance हमारा will not ज्ञान be removed. हमारे स्वरूप संबंधी है, तो हमको Our ज्ञान भी ignorance अपने is स्वरूप related to संबंधी our प्राप्त Swarupa, करना so we have to get knowledge also of our और Swarupa हमारे only. अज्ञान का अधिष्ठान हम हैं, तो ज्ञान We are the हमें भी adhishtan प्राप्त of the करना Agyan, पड़ेगा, so नहीं कोई we have दूसरा to take Gyan हमसे also ज्ञान there प्राप्त कर only. रहा है और हमारा ज्ञान हट जाएगा। Not that somebody else is getting knowledge and our ignorance will be dispelled. नासितम आत्मना, इसमें थोड़ा आप दूसरे प्रकार से भी संधि विच्छेद कर लेते हैं संस्कृत की दृष्टि से, हालांकि ऐसा अर्थ है नहीं। नाशितम का मतलब ना अशितम, Na Ashitam Atmana. So na Ashitam. Ashitam is to eat. अज्ञान को नहीं खाया है, One who has not eaten the Agyan, वो इससे दूर हो जाएगा। he will be क्या away मतलब from अज्ञान को नहीं खाया कि अभी this. So what does that संसार में mean? हम अज्ञान को ही खा रहे हैं, Currently in our life we are consuming the भ्रम है कि मैं Agyan, शरीर the ignorance only, because we have this illusion that we are the जितने भी body क्रियाकलाप और जितने and भी आने वाले whatever हैं, और उसी का चरवण हम करते रहते हैं। we हमारे have अंदर related चलता to the रहता है, body, we just keep चीज thinking बार बार about चलती that है। only, हम किसी चीज को related to the खाते body हैं, only, like उसको मुंह whatever डाल के we उसको eat, चबाते हैं। we keep chewing that. इसी प्रकार की चबाना इसको चरवणा बोलते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार की चरवणा हमारे विचारों की भी चलती So है। in Sanskrit it is called charvana. एक So विचार हमारे our अंदर आ thoughts गया, are also like that. We think किसी के अंदर something हमारी आसक्ति हो गई, and suppose we become attached to तो फिर हम उसी के somebody बारे में विचार and करते then we रहते keep हैं। thinking शायद about मैं ये him करूंगा, only. फिर ये मैं करूंगा, I will किसी से meet him. प्रेम प्रीति हो जाए, If तो we वो have चलता रहता है ना, love with तो ये अविद्या ही, somebody, then we keep thinking ज्ञान about that only. It वो is उसी avidya, अज्ञान को खाता ignorance only. रहेगा But you will keep thinking about that only in his mind. तो ये भगवान कहते हैं कि जो ऐसा So नहीं Bhagavan खाता है, says, one who does not वो eat like this, ज्ञान से मुक्त हो जाता है। ये he becomes free from this ignorance. तो उसका फिर प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार की चरवणा से जब हम मुक्त हो So जाते हैं, when we become free from this continuous chewing process, continuous thinking, pondering on that, then we become situated in our Swarupa. Currently we are continuously chewing our Agyana only. Like some animal keeps eating grass, like in the same way we keep chewing the
Ajnana, the ignorance only. The world is moving with Ajnana only. हमारा जीवन The world, our body, our life, it is all based on Ajnana. हो जाएगी. When we get the Jnana, then we will become free. तो उसी के लिए भगवान ने कहते हैं कि ज्ञानी ने तू तद ज्ञान. So regarding that only Bhagavan says. तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं. किसी का कोई प्रश्न हो तो ये. So we will stop here for today. If you have any question, you can ask. I have two questions, if I may. So there are two ahankaras, and the material ahankara is inert. Could you help me understand how ahankara can be inert? Because it seems some awareness is needed for the notion of I. It's like if I give you a bulb gives light, right? You will agree to that? That bulb gives light. But if there is no electricity in it, will it give light? But we still call it bulb. So ahankara at that time is just a material thing. It's only when it gets conscious by aham bhava of Atma, then it acts. And that's what we have been calling it as ahankara. But if it is without that, then it's just ahankar tattva, material. Okay, so by itself it doesn't have any, it has no, it cannot be actualized. It's jada, Yeah. it's inert. Okay. Uh-huh. अब अंग्रेजी में बोल दिया, लेकिन हिंदी वाले क्या करें? Regarding seniority, so it seems that in spiritual circles there's much more emphasis put on that than the material mundane life. For example, who is served first, who is given the ilam first, who gets a garland, how people are addressed, even the difference between men and women. So even though the understanding is there that it relates to the body, there's more emphasis placed in spiritual circles than in those people who are not knowledgeable about that. So why is that? तो उनका प्रश्न ये है कि So her question is that in the spiritual organizations, in spiritual circles, ये सीनियर है या जूनियर है, this है या छोटा, इस प्रकार seniority concept, the difference of seniority is seen, but we don't see in the outside world. उसका कारण, the reason So- for that is that because in the spiritual society we are told to be humble and be respectful to others. So we are taught like that. But that does not mean that the senior person has to have that ahankar. तो क्योंकि हमें आध्यात्मिक मार्ग में सिखाया जाता है दूसरों को आदर देना, दूसरों के प्रति एक उत्कृष्ट दृष्टि रखना, लेकिन जो सीनियर लोग हैं Those who are seniors, उनको ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए they should not think like this, that they are seniors, कि मैं ज्येष्ठ हूँ और कनिष्ठ मेरा आदर करें. that I am senior, so the junior should respect me. लेकिन स्वयं मानदा मत बनो कि लोग मेरे को मान दें. Should not have that idea of expecting or demanding respect from others. They should also think We like should this, respect seniors and seniors. Second thing is that it is also not true that in the material world it is not there. In material world also it is very much there. It may not be visible like that, but if you go to corporate office, when boss is boss, you say something against the boss, he will fire you. Same in the politics. Senior politician, junior politician, they have big ego like that. It's everywhere. बाबा जी ये आक्षेप शक्ति और विक्षेप शक्ति समानांतर Question: Akshep and Vikshep Shakti does it have same meaning? विक्षेप सही शब्द है, आक्षेप. So yeah, actually the perfect word is Vikshep. Akshep can have a different meaning also.
बाबू जी, नवदीप जी का प्रश्न है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, जैसा कि श्री कृष्ण Question: भी कहते हैं कि Karma हर has व्यक्ति to हर be समय done, कर्म like करता Bhagavan रहता Shri है। Krishna also says अर्थात that किस प्रकार everyone एक जीव स्वयं को is कर्ता working समझे all the बिना time. सारे कार्य कर So, सकता है। how can a jiva पहले तो आपको perform work समझना without पड़ेगा कि understanding स्वयं himself क्या as है। the doer? So, answer: first of all, you have to understand अगर आप who ये you समझ are. लेंगे कि मैं क्या हूँ, If वही you तो can understand समझाना है। who you are, तो that is आप what Bhagavan is शरीर को teaching. मैं मान रहे हो कि आत्मा को मैं Who मान रहे am हो? I? Am I this तो body आत्मा में or तो the Atma? कर्तापन So, है नहीं, in Atma, आत्मा there तो is no कर्ता नहीं है। doership. तो इसको अगर आप समझ लोगे तो वो चला जाएगा। If we understand this, then that will अगर go आप away. अपने को शरीर मानते रहोगे And if तो we keep कर्तापन मानना considering that we पड़ेगा। are फिर the आप body, ये सोचिए कि मैं then we have to कार्य कर accept रहा there हूँ is लेकिन भगवान doership. के लिए कर रहा हूँ। Understand अलग that अलग we are मार्ग हैं, तो working, but ज्ञान मार्ग working में for आपको शरीर Bhagavan. को छोड़ना है, Because सब there are छोड़ना है different ज्ञान में। paths. In और भक्ति Gyan मार्ग Marg, we have to give up the भगवान के लिए Kartritva, कार्य the करना है, doership. भगवान का दास And दास in है, तो Bhakti मैं Marg, we work for मेरे Bhagavan. अंदर दासत्व होगा So, ना। if और we are दासत्व Dasa का of मतलब Bhagavan, so there will be सेवा Dasatva. करना। तो So, मैं शरीर का Dasatva कर्ता means to हो do गया, seva. So, लेकिन then मैं I वो am the नहीं doer कर of the seva, but I am not doing it for myself. पुरुषोत्तम जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। अध्याय में भगवान ने बताया है कि स्वभाव की व्याख्या की अध्यात्म, तो वो गत क्लास में आपने कुछ व्याख्या की थी, मगर अभी वो स्पष्ट नहीं है कि स्वभाव को अध्यात्म क्यों कहा है। स्वभाव को अध्यात्म। So, question was that why Bhagavan has told that Swabhava is Adhyatma. कहाँ पर कहा है? 8वें अध्याय में वो तो जीव का स्वभाव है, वो जीव के लिए। So, in 8th chapter, yeah, that is the Swabhava of the Jiva. That is told for Jiva. तो उसको अध्यात्म क्यों कहा है मगर? But why is it called as आत्मा का Adhyatmic? स्वभाव है ना। Because अध्यात्म का that मतलब है is the आत्म Swabhava of संबंधी। the Atma. Adhyatma means that is related to Atma. वो प्रश्न के अनुसार उत्तर दे रहे हैं ना। प्रश्न Bhagavan की is समझ answering लेना। according to the किम question. अध्यात्म अध्यात्म उनका प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। अध्यात्म क्या है, यही So प्रश्न किया Arjun है had ना। asked, what is Adhyatma? उसे स्वभाव क्या है, नहीं प्रश्न किया मेरे नहीं अध्यात्म। बाबू जी, नरोत्तम जी का प्रश्न है, कभी कभी हम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ये अर्जुन का प्रश्न। किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो उन्होंने स्वभाव को तो उत्तर दिया है उन्होंने। उनका प्रश्न है अध्यात्म क्या है। So he has answered Arjuna's question. The question was, what is Adhyatma? So Bhagavan says, Adhyatma is Swabhava, वही तो आत्मा। our inner bhava. That is the Atma. नरोत्तम जी पूछते हैं, कभी कभी हम सुनते Next हैं question. कि Sometimes आत्मा शरीर में we रहते हुए hear अनुभव करती है। that Atma यह अनुभव being कौन in the करता है, body आत्मा या does शरीर? experience. Who is the experiencer, the Atma or the तो body? ये बात बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको So ठीक this से question समझने is के लिए। always asked. You have to understand ये this जो हम बोल रहे properly. हैं कि आत्मा When I शरीर, am saying शरीर अलग आत्मा अलग, Atma body, Atma हम different, body समझाने की different. दृष्टि से बोल रहे हैं। This we are जैसे telling like आपने this for दूध में explaining. पानी मिलाते Like हैं, suppose you mix water in दोनों milk, मिल गए so both are एक साथ। mixed together. अभी तो आपको पता नहीं है कि दूध है Now पानी you do है, not know whether it is milk or water. दूध ही दिखता है। अगर आप You see it as milk only. If पानी you में दूध मिलाया तो are पानी दिखेगा। mixing पानी water में भी in दूध milk, मिलाया जा सकता है। you can mix milk in water also. तो अब अगर आप Now दूध जिसमें पानी मिला हुआ है उसको आप the milk in which there is water, if you मैं drink आपसे that, पूछूंगा आप दूध पी रहे हैं कि पानी पी रहे if I ask you what are you drinking, milk or हैं, तो आप water, क्या कहेंगे? यही what कहेंगे will कि you मैं तो answer? दोनों ही पी रहा हूँ क्योंकि दोनों You मिले will हुए say हैं। that I am drinking both because both are mixed. तो वो तो हम आपको समझाने के लिए बोल So रहे I हैं कि am ये telling दूध और that पानी मिला for हुआ है, दूध explaining. दूध है पानी पानी है, Milk is milk, लेकिन water वहाँ is तो दोनों water, मिले हुए but हैं। there both are mixed. तो ऐसे ही ये हमको समझाया So जा रहा है कि similarly, आत्मा this is आत्मा for है, explanation
Atma is Atma, body is body. लेकिन अभी हमारी स्थिति But क्या in है our current कि आत्मा situation, अपने को शरीर माने बैठी है। Atma is considering itself as body. They are not mixed like water and milk because they cannot be mixed. Actually, even water and milk cannot be mixed because water is water, milk is milk. But we cannot differentiate between both. Milk cannot become water, water cannot become milk. The milk molecule will remain milk molecule only. Water molecules will remain water molecules only. उनके जो परमाणु हैं वो तो एक दूसरे नहीं बन जाते हैं ना। तो इसी प्रकार आत्मा आत्मा ही है, शरीर शरीर ही है। So Atma is Atma, body is body, but both have like kind of like fused, and Atma is considering itself the body, and body has no separate thinking of its own. So there is no point in asking this question that who is experiencing, Atma or body. Both are अगर अलग से कुछ कर together now. If Atma would have been doing something else apart from the body, we could have asked. Atma cannot do anything apart from body, without body, and body also cannot experience without Atma. आत्मा के बिना शरीर को Atma cannot experience without body, without Atma, body cannot experience. So, what is happening? Who is doing? प्रश्न ही गलत। Atma or body? The question itself is wrong. Both are doing. तो इसको ठीक से समझना पड़ेगा। So, we have to understand this properly. संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद, प्रणाम बाबा जी महाराज। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे से समझाए। एक चीज का So, doubt thank you है very much for explaining these two verses so nicely. One doubt is that कि माया के दो भाग हैं, विद्या Maya has two parts, Vidya and Avidya, and as you explained, गुण है और Vidya is in Sattva Gun, Avidya is Rajas Tamas. थोड़ी सी समझ नहीं आ रही So, this is not clear to me. है। If Adhyatma is beyond the gunas, गुण तक ही लिमिटेड है, वो अध्यात्म हमें मैं आत्मा हूँ ऐसे कैसे दिला सकता है? so how can the Vidya part of Atma, I am Atma, how can it be done? So, as I said, it does not give that knowledge, it just illuminates that ज्ञानम knowledge. प्रकाशयति, आदित्य के समान। जब सूर्य प्रकाश As in Gita, Bhagavan has said that, as I said, if there is light in the room, then light is not creating the table or chair. It just illuminates that प्रकार जब वो अज्ञान in हट light. जाता है तो Similarly, when the ignorance is removed, then the knowledge is illuminated. बाहर से जो आवरण था वो आवरण ज्ञान The covering from outside, the covering is not creating the ignorance. प्रकाश ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। प्रकाशयति का मतलब है वो प्रकाशित हो जाता है। The knowledge just gets illuminated. तो उसी का एक फॉलोअप ये है कि क्या जितने भी अध्यात्म मार्ग हैं सबसे पहले वो इसीलिए So the follow-up question, all the different spiritual paths, are they meant for motivating us to come to Sattva Guna? Yes, because as long as you are in Rajas Tamas, you will keep doing what people do, बनी रहेगी and then that becomes your understanding and you cannot come out of that. इसी मार्ग में आध्यात्मिक So किसी में ही चले जाइए। you go to any spiritual path everywhere. Why there are so many rules? Don't eat this, don't eat that, don't eat onion, garlic. I will not talk about carrot. Then the question will be raised, why not to eat carrot? But at least people understand onion, garlic easily. इसकी मना क्यों किया जाता है? So why it is forbidden everywhere? Why is it said that you become vegetarian, don't remain non-vegetarian? Because it is rajasic and tamasic. और वो भोजन से फिर आपका शरीर मन सबको प्रभावित करता है। And then it affects the body, mind, everything. और कुछ है? नवदीप जी का एक और प्रश्न है। One more question. धर्मों में मूल In the Abrahamic faiths, के द्वारा निषिद्ध फल खाना the वैदिक या the गौड़ीय forbidden, वैष्णव धर्मशास्त्र से मेल नहीं खाती। क्या हमें अब भी that story of apple अपनी परंपराओं में being सही या eating that being forbidden, it does not match with our shastras. So how do we understand? Yeah, in their faiths it is right. So what have we got to do with that? हमारे अनुसार गलत है। According to us it is wrong, but for according to them it is right. पीछे माइक दे देना। हाँ है तो बोलिए। भक्ति योग को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। Here Bhakti Yoga is told as greatest.
ये ज्ञान होने लगता है मैं का अहंकार With bhakti yoga, the atma starts getting the knowledge, the जिससे ahankara शरणागति में starts reducing, and it helps in sharanagati. भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है, So answer yes, from bhakti yoga you get jnana, because bhakti yoga is the antaranga shakti of Bhagavan, and in antaranga shakti it has two parts, samvit and ladini. से ज्ञान होता है। From samvit we get jnana. तो इसलिए जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, भागवत में कहा है कि ये ज्ञान देती है आपको, स्वाभाविक है। In Bhagavatam it is said it naturally gives you knowledge. Here jnana means this experience. ठीक है, और भी है कुछ? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।